लॉट ऑफ टाइम्स जब आई स्टिल रिमेंबर एक एक दिन में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, पूरे महीने काम किया एंड में मालूम पड़ा 3 लाख के लॉस में. थिंग्स लाइक दिस हैज हैपेंड. What I have understood is if I cannot handle the losses, I cannot handle the profits as well. Thank you so much, Himanshu bhai, on my show, and I'm very glad that you are here. And even my audience will be so much glad कि उनको जो questions है उनके जो बहुत सारे उन्होंने कई question मुझे भी queries forward करी थी कि ताकि आपसे मैं वो question पूछ सकूं कि बहुत सारी चीजें आज आपसे मुझे सीखने को मिलेगी. और कई questions हैं जो मैंने आपके लिए रेडी कर रखे हैं, जो कि हमारी ऑडियंस भी है, हम भी हैं, एजेंसी ओनर भी हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत सारे स्ट्रगल करते हैं. और मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को कि हमारे साथ है हिमांशु अग्रवाल, जिनकी 3 कंपनियां हैं. नंबर वन इज वो एजेंसी भी रन कर रहे हैं. सेकंड वन इज मेल जार, राइट. मेल जार इज ऑल्सो ए कंपनी ऑफ हमारे हिमांशु भाई के. सेकंड थर्ड वन इज के वो बिजनेस ऑनर को कंसल्ट करते हैं, राइट. चाहे वो बिजनेस ऑनर हो गए, एजेंसी ऑनर हो गए, लाइक, या फिर किसी भी फ्रीलांसर, मतलब डिजिटल इंडस्ट्री में अगर हमें आगे बढ़ना है, राइट, तो वो सभी को कंसल्ट करते हैं. और इनका मेन चीज ये है कि ही डजेंट बिलीव टू मेक कंटेंट क्रिएशन. क्योंकि हमने हिमांशु आपकी कई सारी वीडियोस भी देखी हैं, आपने कुछ पॉडकास्ट भी किए हैं, राइट. तो वहां पे आपने बताया बताया कि कंटेंट क्रिएशन यू डोंट बिलीव इन दैट, राइट. एंड क्योंकि वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, 2 से 3 साल का उसमें समय लगता है. बट यू डोंट इवन आपने ये भी बोला है कि मैं ना मार्केट से बिल्कुल अलग चलता हूँ, राइट. मैं अपोजिट चलता हूँ, राइट. तो आई सीन दैट वीडियो एग्जैक्टली. तो बेस्ड अपॉन दैट हम वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट नहीं करेंगे. हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ जो भी हमारे बीच में क्वेश्चन हो वो सेपरेट हो, राइट. Right. हाँ. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि लाइक पहले के जो हिमांशु अग्रवाल हैं वो कैसे थे और अभी कैसे हैं, थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में. Sure. और So I think you have already given the introduction, but मैं एक बार brief देता हूँ. Hi, my name is Himanshu. I'm 23 years old right now. By this date, as you're watching this video, as we are recording this video, I have 3 companies. One is the agency. It's called as Back and Closers. That does around a revenue of 35-40 lakhs a month. Secondly, I own a consulting company. Consulting company does around 2 to 2.2 crores a month. And third, वाह. मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है. सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर मेरे पास 4 सॉफ्टवेयर हैं. वन इज बुक माई मीट, सेकंड इज वेब प्रो, थर्ड इज मेल जार एंड फोर्थ इज यूनिवर्सिटी, विच आर 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर दैट वी प्लान ऑन. एंड उसमें से 2 सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर चुके हैं, 2 सॉफ्टवेयर बिल्डिंग फेज में. सो दैट इज वॉट आई एम अबाउट. आई स्टार्टेड माई जर्नी 2.5 years बैक. 12,000 रुपये 6,000 रुपये पर मंथ की मेरी जॉब थी. 12,000 रुपये बीपीओ में जॉब थी, उसके अंदर एक 6,000 रुपये दूसरी जगह पे जॉब लगी. एंड 10 महीने मैंने वहाँ पे काम किया. आई लर्न एवरीथिंग फ्रॉम लैंडिंग पेजेस, कॉपी राइटिंग, सेल्स, क्लोजिंग, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन ऑफ. एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस एंड 2.5 years में हम यहाँ पे हैं. वाह, दैट्स ग्रेट. सबसे बड़ी बात होती है ना कि लोगों में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, भाई, तो स्टार्ट करने से लेके अचीव, जो हम कुछ अचीव कर लेते हैं, वो माइलस्टोन जो हमें चाहिए होता है, सपोज 1 CR, 2 CR, थर्ड या फिर 3 CR, जितना भी, एक तरह से हमारा पहला माइलस्टोन होता है 1 CR का, राइट. तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने उस 1 CR को लाइक अचीव करने से पहले या फिर अचीव करने के बीच में जो ड्यूरेशन था, वो काफी, आई नो कि काफी हर्डल्स वाला रहा होगा, राइट, काफी पेशेंस वाला रहा होगा. कुछ ऐसी भी आते हैं जो आपने बोला कि लाइक नाइट पर्सन, राइट. नाइट पर्सन इट मीन्स कि आपने बहुत सारा अपना वो जो रातें हैं ना, आपने स्पेंड करी होंगी, राइट. तो मैं राइट. उन रातों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आपने भी वो ऐसी रातें स्पेंड करी हैं अपने टू अचीव योर ड्रीम्स, जो अभी आप स्टेज पे हो. राइट. सो इट हैज़ बीन मतलब ब्लड स्वेट टीयर्स सब कुछ लगाया है टू गेट दिस थिंग विच आई हैव राइट नाउ. बिकॉज आई कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली. हमारा सेल्फ एस्टीम जीरो होता है, हमारा बिलीफ खुद पे जीरो होता है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. एंड टू गो फ्रॉम देयर टू व्हाट आई हैव बिल्ट टिल नाउ, दैट टेक्स इमेंस हार्ड वर्क. सो येस, आई वुड से कि डेफिनेटली मैंने मतलब वो मेहनत करी है, वो काम डाला है, वो पसीना बहाया है, उतने धोखे खाए. आई हैव डन द सैक्रिफाइस एज वेल टू गेट द पॉइंट आई एम. As you said, what is the difference that you see in between two of the Himanshu Agrawals? The first one, I would say, like there's 3 major difference जो उसको समझ में नहीं आते और जो इस हिमांशु अग्रवाल समझ में आते हैं. एंड those 3 simple differences are self esteem, courage and economics. जो पहले वाला हिमांशु अग्रवाल था, he had zero self esteem. That means he cannot charge high ticket for his products.
ही डज नॉट फील ही कैन बिल्ड अ टीम, ही डज नॉट फील कि लोग मुझे क्यों फॉलो करेंगे, ही फील्स कि उसकी आइडियोलॉजीज खराब है, उसको ऐसा लगता है कि लोग बोल रहे कंटेंट बनाओ पर मैं बोल रहा हूँ कंटेंट मत बनाओ तो शायद वो गलत है, एंड ऑल दीज थिंग्स लाइक सेल्फ क्लैश बेसिकली. सेकंड थिंग इज करेज, यानी कि जो पहले वाला हिमांशु अग्रवाल है, ही इज वेरी रिस्क एवर्स, लाइक ही कैन नॉट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क. This one, Himanshu Agrawal, is like free with risk, play all in, full bets. And then the third is economics. That person don't understand economics. Market के dynamics क्या होता है, एक funnel के dynamics क्या होता है, एक audience के dynamics क्या होता है, किस तरीके business grow होता है, cash flow क्या होता है, positive flow, everything like that. So that Himanshu Agrawal didn't knew that, and this Himanshu Agrawal is super clear on that and exactly knows वो क्या कर रहा है, right? So these are three major difference I would say. वो तीन difference की वजह से I'm sitting where I am right now. Awesome, that's great, man. ये इतनी सारी चीजें आई नो कि जैसे आपने डिफरेंशिएट आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि पहले का हिमांशु अग्रवाल एंड अभी का हिमांशु अग्रवाल ने जो जर्नी फेस करी है ना, आई थिंक अगर सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है, राइट? तो मैंने कहना है कि मुझे जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये क्वेश्चन आते हैं भाई कि मुझे ना बहुत सारे मतलब बीच बीच में छोड़ने का मन करता है ये इस तरह की चीजें, राइट? कई बार ऐसा होता है कि पैसे नहीं आ रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मजा नहीं आ मतलब मजा तो आ रहा होता है तभी तो हम इस जर्नी में आए, लेकिन पैसे नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन फैमिली का प्रेशर रहता है, राइट? और भी कई सारे हर्डल्स रहते हैं कि हम अकेले रह रहे हैं, हम कहीं भी लाइक वी आर थिंग इज कि ऐसा वो लाइक आपकी जिंदगी में भी ये चीजें आई थी कि आपका मन किया था कि यार मुझे छोड़ देना चाहिए ऐसा कुछ मतलब? a lot of times जब आई स्टिल रिमेंबर एक एक दिन में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, पूरे महीने ओ। काम किया एंड में मालूम पड़ा 3 लाख के लॉस में. थिंग्स लाइक दिस हैज हैपेंड. what I have understood is if I cannot handle the losses, I cannot handle the profits as well. हम्म। एंड व्हेन द लॉसेस हैपन, मुझे खुद से ये रिलेशन होता है कि अगर मैं ये लॉस कर पाया तो मुझे एग्जैक्टली पता है लॉस क्यों होता है, यानी कि इसका इन्वर्स करके मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ. एंड माई माइंड सेट वॉज ऑलवेज कि लेट्स थिंक द पॉजिटिव इन दिस, बिकॉज इवन इफ आई एम द वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं यहाँ से निकल सकता हूँ बिकॉज आई नो वॉट नॉट वर्क्स. सो अगर मैंने अभी तक जीवन में जो किया वो काम नहीं किया, वेरी गुड, बिकॉज आई नो वॉट नॉट वर्क्स. तो इसका उल्टा करना तो वो मिल जाएगा जो चाहिए. So that was the mindset I already had. Second was when you're talking about pressure. Yes, pressure increases, stress increases, but money is nothing but the byproduct of stress tolerance. The more stress tolerance you have, the more money you can make, right? For example, आपने एक दिन में 2.5 करोड़ निकाले. अब वो एक दिन में 2.5 करोड़ निकालने के बाद जो टैक्सेस का झंझट, जो सीए का झंझट, जो लॉयर का 1,000 झंझट उसके साथ आता है. Do you have that much of stress tolerance that you can accept that? And if not, 2.5 crores are not looking at you, believe me, because a lot of people deserve that money that you don't, right? So वो पैसा दुनिया में बट रहा है, but it's like, are you worthy enough of that money that the money should be with you, right? And do you believe in yourself कि हाँ वो पैसा मैं ला सकता हूँ? And if that is the case, then you can get it. And the last thing was कि वो स्ट्रगल आता है, पेरेंट्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर होता है, एक हज़ार चीज़ें होती है उसमें से. हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दैट प्रेशर, और हाउ डू यू रिमेन काम इन दैट प्रेशर? द सिंपल थिंग इज कैलकुलेटिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो. मैंने ये किया हमेशा. इवन इफ आई लॉन्च समथिंग, इवन इफ आई डू समथिंग, आई जस्ट कैलकुलेट द वर्स्ट केस सिनेरियो. व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? सब चले जाएगा, घर पे आके दाल रोटी खा के सोना पड़ेगा, चलेगा. पहले भी वही कर रहे थे, 6,000 की जॉब से बेटर है दाल रोटी खा के घर पे सो जाएंगे, cool. And once you calculate the worst case scenario, then you can play without stress, because stress is the enemy of business. The more stress you have, the less good decisions you can make, because your IQ drops by 50% because of a cortisol named chemical release in your brain. So उससे आपके business decision खराब होने ही वाले हैं. So worst case scenario calculate करो, stress कम हो, now take decisions which will help you in a positive direction. Okay, so scenario is clear that like what is the worst case scenario it may be, right? Suppose अगर हम कोई भी स्टेप लेने वाले हैं, फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर ये माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं अब सब कुछ मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, या फिर लाइक मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो what will be the worst case scenario, ये हमें याद रखना पड़ेगा, right? So that is a like clear way to understand like how we can like live with that like step whatever we are feeling these days, right? So exactly. एक चीज और है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ना लाइक यहाँ तक लाइए पुश करती रही है, कि मतलब एक होता है ना कि आई एम सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड लाइक चुल, राइट? ऐसी कौन सी वो चीज थी जो आपको ना मतलब पुश करती रही कि नहीं यार मुझे ना कुछ ऐसा करना है जो लाइक 95% और 96% आर नॉट नॉट डूइंग द सेम, राइट? मुझे ऐसा करना है समथिंग ऐसा कुछ ऐसा थोड़ा सा So I प्लीज। think there are two questions over here. The first question is what was pushing you, and the second question is what made you come into this industry and राइट। differentiate yourself, right? So I'll answer two of the questions. The first one was family. The thing that was pushing me was family. मुझे पता था that if I don't change this hierarchy right now, it will keep on going, right? So if my ओके। father is having a job of 25,000 a month and still is doing a job of 25,000 a month, and if I don't
change that switch, it will just keep on passing. Because my grandfather was not so rich, my father is not so rich, I am not going to be rich. But if I change the switch, then everything would change, right, for the future generation. So that was the thing that was going in my mind, because my mom has done enough sacrifices for the past 20 years, and I can't see her anymore in pain. And that was the thing that was pushing me, even in most stressful situations, because it's like my mom is at my home, right? So unka dhyan rakhna hai, because she has given her all into me, and now it's time to return, right? I cannot return in lifetimes, but still give my best to her. So that was the first thing. The second thing was, what was making me a differentiator in the industry. I think it was not following the norms, the simple norms that industry follows. I don't believe in those. मेरे को लगता है सब bullshit है. They are just, trying to Right. market you something. For example, wake up at 5 a.m. I don't believe, bullshit. Make your bed when you wake up. I have not done in my life. um, Drink coffee. I have not done meditation. I don't do any of the things that you see in the market that most entrepreneurs are doing. I don't do Right. any of that, and I've not done any of that. All the bad habits in the world, I have them. All the non-fancy things that are that are not promoted in the entrepreneur space, I'm doing that. All of the fancy things, I don't even touch them, right? So it's like most of the things are just marketing norms in the industry that people are following rigorously and thinking something is changing. Nothing is changing. It's just wake up, put in the work, sleep. Do that for a long period of time, you'll get the results. Wow. दैट्स नाइस एक्चुअली कि आप इतना मतलब काम और इतना चिल कैसे रहते हो लाइक ऐसा कुछ मैंने आपकी कुछ वीडियोस भी देखी हैं आपके लाइक गोवा में अभी आपका इवेंट भी हुआ था राइट वो भी मैंने देखा और वैसे भी रियल लाइफ में आप एकदम चिल रहते हो वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि मतलब नो स्ट्रेस नो क्योंकि इस टाइम पे अगर देखा जाए ना तो वाकई में लोग स्ट्रेस रहते हैं काम के साथ या फिर पीछे और भी वर्कलोड रहता है उनका चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में हो या फिर अपने किसी भी बिजनेस में हो। So I think there are two answers for that. The first is always the worst case scenario, because मैंने सारी चीज़ों के worst case scenario अपने दिमाग में पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं. तो मेरा ऐसा है कि हाँ क्या ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता. So I'm like chill. The second more reason for that is because I have been always a student of delegation, and I love that thing to a level where my only work in business is to create decision makers. That's it. Your only role as a business owner is to create more decision makers in your company, and those who are good decision makers. So the reason I don't have any stress is because all the three companies, I have different CEOs appointed. So I'm not the CEO of any of the companies, right? I have different CEOs appointed for that company, and I'm just the founding member of that company. I'm just the board member, as you can say, of the company. I have equity in the company. I'm the board member, and I just operate from the overview level. While all the CEOs run that company. So, for example, backend closer is run by Vaishali. The software company is run by Shruti, and I have all these CEOs who run this company. They also have the equity. That's why they play the longer term game. And my only role is to make them a good decision maker. The moment they become a good decision maker, their decisions start to influence my money. And if they're a good decision maker, I'll make good money. And that's a simple equation I play with. And all these companies that I keep on operating and keep on opening, I just keep on hiring CEOs over them, just push those companies out. And now I come to the stress-free zone because I have enough in my bank account that I can retire today and never worry about money again. I have enough for my family that I can die tomorrow and my family would be sure of financially settled. I have enough for my team members as well because I've given them equities in the company that if these companies sold out, they would be millionaires. So my team is happy, my family is happy, I'm happy. Then what's the stress about? राइट डेफिनेटली इट्स ग्रेट एंड लाइक एक क्वेश्चन और है जैसे कि सबसे मेन चीज है कि स्टार्टिंग में एक हमारा सपोर्टर भी रहता है ना सपोज फैमिली सपोर्ट करती है राइट स्टार्टिंग में राइट या फिर आप खुद ही अकेले निकलते हो घर से कि यार मुझे खुद का सब कुछ बनाना है मुझे खुद का ही सारी चीजें करनी है राइट तो ऐसा आपकी लाइफ में कोई ऐसा सपोर्टर था जो वाकई में आपको बोल रहा था कि यार आप करो हिमांशु आप करो मैं आपके साथ हूँ आप क्योंकि होता है ना कि कई लोगों को बिलीव होता है आपके अंदर कि यार आप कर सकते हो राइट तो जस्ट कीप कंटिन्यू विद दैट एंड आई एम विद यू लाइक I think बिहाइंड यू। my mom was a big reason in that. She always believed in me no matter what I was doing. Even when I was doing a 12,000 BPO की job, she was like, तू तो इस कंपनी में MD बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बस लगा रहे, 4 साल की बात है तो MD बन जाएगा. So she has been always that motivator who has been like कि तू कुछ भी कर तू फाड़ देगा उसमें, right? That's the first thing. Secondly, I have been fortunate enough to get friends who have been supportive. When I started ICE, 2.5 साल पहले, I didn't had a lot of money to spend into ads and do everything. I still remember one of my friends, Somesh Kalal, gave all his life savings into that company, and he's like, नहीं चला कोई बात नहीं. Like कोई बंदा आपके लिए जो आपको जानता भी नहीं टेक्निकली 2 साल हुए जाने हुए is giving his life savings to so that you can run your company. So I've been fortunate enough to have those people around me, and they're still around me, due to which I think I am where I am today. ग्रेट
एग्जैक्टली। एंड सबसे मेन चीज होती है कि इस स्टेज पे आके, राइट, लाइक बीइंग और बीइंग ए ओनर ऑफ थ्री कंपनी और सम मैनेजिंग द एजेंसीज एंड सम अदर स्टफ, एंड इवन यू आल्सो यूजली डू योर इवेंट्स, राइट? तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? सपोज, क्योंकि कई सारे ऐसे, इवन I also struggle to manage my time, right? I know, like, we just make a format on calendar or some other stuff. वो कैसे हम, लाइक, हम अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं अगर कई सारी चीजें हमारे पास हैं करने को तो? It's just the game of calculating your per hour value. So right now my per hour value is 82,000 rupees, right? So if someone is consuming my per 1 hour, it's like 82,000. That's why I don't go for movies into theaters. I don't do all of that. It's because even a 3 hour movie is taking 2.4 lakhs out of my bank account without even the person knowing it. Right? So if a girl asks me out, ki chalo movie chalte hain, I would not go because it's 2.4 lakhs, which she doesn't understand. So ओके। I know my per hour value, right? That's the first thing. So I do things because of two reasons. Either it is more than my per hour value, or secondly मुझे मजा आने वाला है. For example, this podcast is not going to be more than my per hour value, but it is going to give me joy, and it is going to give me inner satisfaction of value that I can give to your audience. राइट, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ. राइट, सो दैट्स द थिंग. सो यू सिंपली व्हाट यू डू इज यू कैलकुलेट योर पर आवर वैल्यू, यानी कि आप महीने में कितना कमाते हो, उसको 30 दिन से डिवाइड करो, फिर 24 घंटे डिवाइड करो, देन यू गेट योर पर आवर वैल्यू. Once you get your per hour value, you need to calculate two per hour values. One is active, one is with sleep. So one you divide by 24, one you divide by 10, 12, whatever hours you work. Now once you get that income, you simply say that whenever I'm waking up, whenever I'm active, how much of this per hour value I'm utilizing at some place and how much I'm not. And once you get to that point where you understand, okay, मेरा per hour value, let's say 12,000 रुपए, am I utilizing and the work I did was 12,000, 12,000 worth or not? If yes, keep on doing. If not, no. As simple as that. So I just keep on seeing. For example, I use my phone for half an hour. Boom, 40,000 gone on reels. That's how my mind works, right? कि Instagram reel चला लिया आधे घंटा, मेरे 40,000 गए. And now I feel like not worth my time. Delete the app because it's 40,000, and 40,000 is a lot of money in India still, right? No matter how much you make. So it's just the concept that I have in my head, which is मेरा पर वैल्यू इतना है, क्या ये काम जो मैंने अभी 1 घंटे में किया ये वर्थ था? नहीं. डेलीगेट, एलिमिनेट और थ्रो इट आउट. सिंपल. ओके। इट मीन्स लाइक हम, लाइक हमारा जो टास्क टास्क छोड़ो, लाइक आपने बोला 1 आवर वैल्यू, राइट? तो वो 1 घंटे की हमारी वैल्यू को निकल पा रही है अगर हम उसको नंबर्स पे खेलते हैं। एग्जैक्टली, लाइक, मुझे लगता है कि आप है ना, लाइक, नंबर्स को बहुत ज्यादा क्लियर रखते हो, राइट? राइट. और मैंने आपकी वीडियोस में सुना भी था कि आप नंबर्स पे ज्यादा ध्यान रखते हो, वो खेलते हो, लाइक, इज दिस रियली, लाइक, नंबर्स रियली मैटर्स? Yes, because business एंड is हाउ? nothing but maths and psychology. I always say this: business is nothing but maths and psychology. If you understand the math side of the business and the psychology side of the business, maths मतलब मेरा conversion rate क्या है, मेरा optimization rate क्या है, मेरा retention rate क्या है, all of these numbers. And the second thing is you understand psychology, psychology of investors, psychology of vendors, psychology of customers, psychology of team. अब ये दो चीज समझिए, business और test के अलावा कुछ है ही नहीं. And if you take it on the broader perspective, life is also nothing but maths and psychology. Right, your age is maths, your date of birth is maths, right? It's numbers basically. So life is based on numbers, or it's based on psychology. What you think, what's your story, what's the beliefs you had, what's the psychology you're operating with. So life is nothing but maths and psychology. If you crack those two parts, it becomes much more easier to play the game, because now you understand the basics fundamentals of the game. There are two things: maths and psychology. Similarly, in business, you understand maths and psychology. If you want to make a funnel and make it operate, maths and psychology. What's the economics of the funnel, and what is my offer? What do the customer thinks when he sees that? What does the customer think in the funnel? What does the customer think after reading the email? What does the customer think in my webinar? Psychology. Right? So it's just two things. If you crack that out, it becomes much more easier. ओके। सो इट मीन्स लाइक इट रियली मैटर्स। अगर नंबर्स की क्लियरिटी होती है ना, देन एक्शन हमारे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। Right. दैट्स ग्रेट। एंड अभी अब थोड़ा सा ना, थोड़ा स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग के मतलब कुछ क्वेश्चन है, 4 से 5 हमारे और क्वेश्चन है, जो कि एक, सपोज कोई भी एक पर्सन, सपोज कोई भी एक हिमांशु अग्रवाल, एक, राइट, जो कि ऐसे कई सारे हिमांशु अग्रवाल होंगे जो स्टेज पे आना चाहते हैं, राइट? ऐसे इस पैटर्न पे आना चाहते हैं जहां पे अब एक तरह से हमें ना टेंशन ना हो पैसे की, या फिर हमें कहीं भी घूमने की, या फिर बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने की, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा हिमांशु अग्रवाल स्टार्टिंग करना चाहता है, राइट, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो? वो कहाँ से स्टार्टिंग करेगा, राइट? एज एन, उसको कुछ नहीं पता बट वो करना चाहता है, उसके अंदर भी ऐसी चूल है कि वो दिखाना चाहता है कि यार, सिंपली
एंड उसके पेरेंट्स को भी बिलीव है कि सपोज अगर मैं हूं तो माय पेरेंट्स बिलीव मी अलॉट, बट द मेन थिंग इज हाउ वी कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। डोंट प्लीज। लव द एंड प्रोडक्ट बिकॉज एज यू सेड कि हिमांशु अग्रवाल तेरा पैसा कमाना चाहता है, घूमना चाहता है, स्टेज पे आना चाहता है, दैट्स द हाँ। एंड प्रोडक्ट। आई नेवर केयर्ड अबाउट द एंड प्रोडक्ट, आई नेवर न्यू आई वुड अचीव दिस, राइट? आई जस्ट लव द वर्क दैट आई डू। मेरे को अभी भी ईमेल लिखना पसंद है, मेरे को अभी भी सेल्स कॉल करना पसंद है, मुझे अभी भी डिलीवर करना पसंद है, मुझे अभी भी लोगों का बिजनेस बढ़ाने में मजा आता है। इट इज इनहेरेंट इन मी। सो डू द वर्क दैट यू लव, right? I would not say it passion because that's some other word, it has some other definition, but I would simply say do the work that you love. यानी कि उस चीज़ का अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा फिर भी आप कर रहे हो, because that way you'll never quit on this, and if you never quit you're consistent, and if you're consistent you can pay, you can get paid huge amounts that other people are not because they're not consistent. So don't get in this business shiny है, stage मिलता है, लोग वाह वाह राइट। करते हैं and all of that. I never had this dream. I was simply like कि मेरे को मेरे 4 बड़े क्लाइंट मिल जाए, वहाँ पेइंग मी गुड मनी, एंड मैं 4 बिजनेस ग्रो करता हूँ एक साल के अंदर, आई एम गुड टू गो. I don't want to create thousands of businesses. But with time, I understood that I need to create that to create the impact I want, right? So don't start with the end goal in the mind and just love the work that you do. If you keep on doing that, you will get to the point where you want to be. But अगर end goal के साथ चलोगे, you'll never reach over there. Right? For example, at 23, I never thought I would be 30 and the 30. But today I'm 30 and the 30, right? So how did that happen? Well, that happened because I never thought of 30 and the 30. I was just like, let me do the work, become the best. And then magazines will automatically pull me out. And you would not believe this. I never applied for the magazine. The magazine, one of my friends applied myself in the magazine and I didn't even knew. And he told me that you have been selected. I'm like, cool. No fucks given. होता बहुत बढ़िया, नहीं होता कोई बात नहीं. It's just a random thing for me which I don't care about because I love my work, right? और जब तक ये चल रहा है तब तक I don't care about any shiny thing that is happening around. ओके, so that's the thing. And next question is like, what was your first USP? Like, how did you start and how Customer like, obsession. yeah, Customer obsession. The only USP I have till now, and the only USP I had that time was customer obsession. In the coaching okay, industry, the point is you sell your 5,000, 10,000 rupees course, and then you're like, अब लोगों को रिजल्ट आता रहेगा, उनको रिजल्ट नहीं right, आया, बहुत बढ़िया, उनकी गलती है, उनने कोर्स नहीं देखा होगा. Very wrong model of thinking in the coaching industry. From the first day, I was like customer obsession, which is if I can't produce result to people, I will not make money from people. As simple as that, right? Today, I have enough like knowledge about sales and marketing that I can sell anything to anyone at mass, at scale, and make crores out of it. But I don't do that, and the simple reason is because I'm customer obsessed. I want to give the result to the customer that he is looking for. So whatever my ad said, would the person get that result? If yes, I'll sell the backend thing or I'll not. And for that reason, I think that has been a USP and that has been the reason that you guys love. Because if I am onto something, I make review now, I'm like, is the person getting value of this? Is the person understanding something about me? भले वो वैल्यू पैसे के टर्म्स में हो सकता है, वो वैल्यू टाइम के उसमें हो सकता है, वो वैल्यू एक स्विच के उसमें हो सकता है, वो वैल्यू भले एक बिलीफ चेंज कर दे, आई डोंट नो. वैल्यू कैन बी एनीथिंग टू एनीवन, राइट? सो इट्स लाइक वट एवर आई एम डूइंग इज इट क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द अदर पर्सन, and if yes, I'll do it. If not, there's no sense. okay. And my next question is like, ask के time पे ना, like we are getting information, knowledge and so many things from our surrounding, right? हर जगह से हमें knowledge भर भर के मिल रही है, हर तरह के tools हमें भर भर के मिल रहे हैं. The main thing is still we are not able to generate the revenue, right? हमने बहुत सा even people are always try to find out like more information, right? But it's still they are not able to make and generate revenue. Like how ऐसा ऐसा क्या हो जिसकी वजह से like something उसको 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 क्लियर हो कि इतने टूल्स इनफ हैं. आप like how do you recommend some tools and how do you like tell them, आप कैसे उनको बता सकते हो कि सिंपली इतने टूल्स इनफ है There's इस. there's there's no list of tools that I can give you. If you have your हम्म. phone and if you even have just your dialer, you can make money. I made money from my dialer. I had a phone, it was called as MI A3. जब वो लॉन्च हुआ था मेरी सैलरी 12,000 रुपये थी, मुझे एक्जैक्टली याद है मैंने वो फ़ोन लिया था एंड वॉज 15,000 रुपीज़ और समथिंग. दैट वॉज माई लाइफ सेविंग्स टिल देन एंड मैंने वो उठा के उस फ़ोन में लगाई थी. उस फ़ोन के ऊपर आई डेंट हैड इवन इनफ मनी दैट टाइम पे कि आई कैन डू रिचार्ज. आज तो 1 GB पर डे ऐसे आसानी से मिल जाता है. दैट टाइम पे इट वॉज नॉट द केस. वहाँ पे ऐसा होता था कि 2 GB हम्म. पूरे महीने चलाना है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर. आई ओनली हैड द हम्म. डायलर. आई यूज्ड टू मेक 45,000 a month from just a dialer because I हम्म. used to call someone Seriously. else's leads and do the sales and get commission out of that. So कोई Okay. भी टूल इनफ है. It's like you have a phone, right? Everyone has a phone. Okay. You have an हम्म. Instagram account. Everyone has an Instagram account. Who Okay. is reaching out to a person and asking them podcast करते हैं? हम्म. कौन सा टूल लगा इसमें?
इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए वो सबके पास है, फ्री में बनता नहीं है तो, बट हु इज आस्किंग? It's not like you have millions of followers and that's why I said yes. I just said yes because I felt कि I can provide value to I think tens of people. That is also fine. वाह। राइट, कोई टूल्स का गेम ही नहीं है वो। इट्स जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज तुम उसको यूज करके पैसा कमा सकते हो कि नहीं। यू लीव मी इन अ डेजर्ट नेकेड एंड आई विल बी इन अ BMW आफ्टर 6 months, आई नो दैट। एंड द रीजन इज बिकॉज आई नो हाउ द ट्रांजेक्शन हैपेंस। मुझे टूल चाहिए ही नहीं, जस्ट गिव मी अ फोन और इवन गिव मी अ लैंडलाइन फोन, आई डोंट इवन वांट दिस फोन स्मार्टफोन, गिव मी अ लैंडलाइन फोन, आई विल मेक इनफ मनी टू बाय अ स्मार्टफोन, आई विल मेक इनफ मनी टू बाय अ लैपटॉप एंड टू बिल्ड द एम्पायर दैट आई वांट। टूल्स का कभी गेम था ही नहीं, इट्स जस्ट एक्सक्यूज दैट वी गिव अस। मेरे पास ईमेल मार्केटिंग टूल नहीं है, लैंडिंग पेज नहीं, ये नहीं, सब बकवास है। यू हैव अ फोन, यू कैन मेक मनी, सिंपल। तो भाई ये चीजें मैं आपसे इसलिए इसलिए पूछ पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल जस्ट दे ऑलवेज थिंक कि इनके पास इतनी सारी चीजें होंगी, इनके पास इतने इतने टूल्स और रिसोर्सेज होंगे, राइट? दे जस्ट फाइंड उनको कुछ ना कुछ एक मिल जाता है तरीका कि एक्सक्यूजेस करने का, राइट? तो इसीलिए फाइनली इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे ये पूछ रहा था, ताकि उनको पता चल सके कि आपके लिए ना एक स्मार्टफोन और सिर्फ आपकी ऑर्गेनिक जो हमारी एक फॉलो अप होता है ना ऑर्गेनिक तरीके से इंस्टाग्राम पे या फिर और भी कई लिंक्डइन हो गया हमारा, वो राइट? भी अगर बहुत वहां दूर पे की हम बात है, फॉलो अप भी करते वो हैं भी ना। बहुत दूर की बात है, तो मेरे डिस्प्ले पिक्चर लगानी पड़ेगी। आई एम जस्ट सेइंग गिव मी अ लैंडलाइन, यू अंडरस्टैंड? लैंडलाइन में 7 डिजिट का नंबर मिलता था। फॉर एग्जाम्पल हाँ 27800800731 जिसके आगे लगाते हैं हम, जो हमें हाँ। टेलीफोन बूथ वाला, जस्ट गिव मी दैट, आई मेक मनी। ओके। राइट, वो भी बहुत दूर की बात है। आई एम सेइंग तुम्हें बेसिक्स 5 साल 10 साल पुराने टूल्स दे दो, तुम उससे ही पैसा कमा सकते हो। इट इज जस्ट दैट यू आर सो लेजी एंड यू आर सो ignorant that you have something in front of you but you will not use it because you want to give an excuse to yourself, as simple as that. एग्जैक्टली। एंड भाई मेरा दो क्वेश्चन और है। ये पहला क्वेश्चन है कि सपोज एज ए एजेंसी ओनर, सपोज आज के टाइम पे हर कोई मैं हमेशा ये सुनता हूँ कि मैं एक एजेंसी ओनर हूँ, लाइक। तो मैं थोड़ा ये डिफरेंशिएट आपसे सुनना चाहता हूँ कि हु इज ए एक्चुअल एजेंसी ओनर, राइट? उसके हम एज ए एजेंसी ओनर उसके पास क्या क्या चीजें होती है, कोई ऐसी टीम होती है, क्या होता है तब उसको क्योंकि आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि हर बताया था कि मैं एजेंसी ओनर हूँ, राइट? तो मैं जस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि हु इज एक्चुअल एजेंसी ओनर। सिंपल होता है, आपके पास आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, फिर आप एक स्किल एक्वायर करते हो, कॉपी राइटिंग, हाँ ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, हाँ फेसबुक एड्स, कुछ भी। वो स्किल एक्वायर करते ही आप फ्रीलांसर बन जाते हो और यू डू अ जॉब। हाँ। सो इधर यू बिकम अ एम्प्लॉय और यू बिकम अ फ्रीलांसर। मोस्ट पीपल ट्राई टू बिकम अ एम्प्लॉय बिकॉज वो कोई कॉलेज से कुछ ना कुछ सीख के थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स जी। करके दे ट्राई टू बिकम अ एम्प्लॉय। वंस दे बिकम अ एम्प्लॉय दे आर लाइक नहीं मुझे अब खुद का कुछ करना है, दे बिकम अ फ्रीलांसर एंड नाउ दे ओके हैव देयर ओन 3-4 क्लाइंट्स, दे सर्व देम, तो वो फ्रीलांसर बन गए। अब जैसे ओके। ही फ्रीलांसर के पास एक दो जने आ गए तो अब ये ट्रायो बन गया, नॉट इट्स अ कंपनी एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ एजेंसी। तो फ्रीलांसर ओके। से एजेंसी का मतलब कुछ नहीं होता है, भले आपके हम्म 0 क्लाइंट्स है, अब 2 जने हो हम्म। करके, क्योंकि एक जने में फ्रीलांस नहीं हो सकता ना, यू कैन नॉट बी फ्रीलांसर्स हैं, यू नीड टू राइट। कॉल इट समथिंग, सो यू कॉल इट एजेंसी। इट्स नथिंग हम्म। बट अ ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स इन द स्टार्ट एंड देन यू गेट इनटू फुल टाइम एम्प्लॉइज एंड देन यू एक्सपांड योर एम्पायर। इट्स सिंपली लाइक दैट। शुरू में आप ऐसा तो होता नहीं सबको हायर करने बैठते हो, आप होते हो, राइट। आपका एक दोस्त को फेसबुक अच्छा आता है, आपको कॉपी राइटिंग आता है, एक को ईमेल आता है, तीनों मिले, तीनों फ्रीलांसर थे, आपस में पैसा बांटा, चालू हो गए, दैट्स एजेंसी सिंपली, नथिंग एल्स। बट देन you get employees and you expand and then things move on. हम्म। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आई थिंक आप जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं ना, वो एकदम क्लियर हो गया होगा कि हु इज ए एक्चुअल एजेंसी ओनर एंड हु इज ए फ्रीलांसर। एंड अनदर थिंग इज लाइक हमारे लिए सिर्फ फोन ही काफी है, राइट? हमें पैसा कमाने के लिए, क्योंकि स्टिल पीपल आर थिंकिंग टू मेक मनी। वो उनको ना एक ऐसा सिर्फ एक ऐसा हवा चाहिए कि ताकि उनको एकदम से कोई पैसा ला के देते, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो यू स्टार्टेड टू रीच आउट द पीपल, राइट? आपने भी वो चीजें की होगी। तो थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ आपके बैकएंड में, और थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपने कैसे कैसे लाइक ये आपका फर्स्ट 1 CR कैसे आपने कंप्लीट किया था, वो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। So I'll tell you a fact. It took me 2 years to get to 1 CR. No, it ओके। took me 1.5 years to make 1 CR full. That took me only 6 months to reach 1 CR a month. And it took me 3 months to reach 2 CR a month. And now I'm on a plan to make 5 CR a month, which is 3 months, 4 months away. हम्म Right, so it's like it's an exponential effect, right? So don't feel like मेरा एक CR तो अभी इसका तो हो गया, मेरा नहीं हो रहा and all of that, because it's exponential effect. You do not know what will happen when, and things will click and you are standing at a point where you don't believe you are. Right now, talking about the 1 CR plan, it's simple. First of all, you need a high ticket product. You cannot make 1 CR with low ticket products. 5-6 हज़ार रुपये का सामान बेच के 1 CR नहीं बनता.
बन Okay. सकता है बट उसमें टाइम इतना लगता है दैट द वन Time ईयर इज लगता है. नॉट वर्थ इट, राइट? सो 2 साल में आपने 1 CR कमाया, कुछ भी नहीं है वो, बिकॉज वन सी Hmm. आर रेवेन्यू में आपका प्रॉफिट 40 लाख रुपए होगा। 40 लाख आप 2 साल में बांट दो, एक्सपीरियंस लाख रुपए महीना, उसमें भी आपने टैक्स लगा दिया, जीएसटी वीएसटी लगा दिया, आप बाहर हो गए गेम के, राइट? आप 50,000 महीने कमा रहे हो, 1 करोड़ 2 साल में कलेक्ट करके, सो इट्स टेक्निकली नॉट अ गुड आइडिया। सो यू नीड Hmm. हाई टिकट प्रोडक्ट्स, राइट? What I call high ticket according to India is something 1 lakh and above, right? Easily. Okay. Something that is 1 lakh and above is high ticket. And if you have Hmm. something like that, you just need 100 customers of 1 lakh and you can make 1 crore a month. So what I do is I do a big webinar where 2,000 people come. Out of that, 200 people buy something of 2 lakhs from me. I make 4 crores in a single webinar in 3 hours, right? So you need high ticket. That's the first thing. Second, you need to deliver results no matter what's the condition. Whatever you promise, are you giving that or not? Because if you don't, in 6 months you'll be out of the game and nobody will care for you. The reason people care for me right now is because I can provide results. अगर मैं 6 महीने तक कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स प्रोवाइड ना करूँ, 6 महीने बाद हिमांशु अग्रवाल को कोई नहीं जानेगा, राइट? नोबडी केयर्स अबाउट Hmm. हिमांशु अग्रवाल. What Right. everybody cares about is what results Himanshu Agrawal can bring to the marketplace. And if that is high, Himanshu Agrawal is valued. If that is low, Himanshu Agrawal is not valued. As simple as Hmm. that, right? So it's like you need to have a high ticket product, you need to provide value. And then the third thing is you need to be smart enough to understand the process to get people to pay you that high ticket amount profitably, right? Because a lot of people, first of all, cannot create high ticket offers. Biggest problem. Even once they create, they're not customer obsessed. That means they just want the money and want to run away. They don't want to do the work after the money is paid. And even if that there's the case, third biggest problem is they're not able to profitably get customers who can pay them high ticket, राइट? Hmm. वो एडवर्टाइजिंग में 20 लाख रुपए खर्चा कर देंगे और 3 कस्टमर में 2 लाख रुपए के, तो आप टेक्निकली लॉस में ही हो, राइट? सो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग, एंड इफ दे कैन क्रैक दिस पार्ट देन एवरीथिंग इज सॉर्ट. Okay. एक्चुअली एक लीड जनरेशन करना सबसे बड़ा मुद्दा होता है, सबसे बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम भी हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे इजी हमारा कोई भी टास्क होता प्रोडक्ट. है. सॉरी. Lead generation is the easiest thing in the world. Easiest thing in the world. If anybody complains about lead generation, they're just giving an excuse. क्योंकि Organically, 3 तरीके लीड जनरेट करने के: जी. कोल्ड डीएम, कोल्ड ईमेल एंड कोल्ड कॉल. देयर इज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड उसके अलावा organically. If I ask you a simple question, how many cold calls you made today? You'll say zero. How many cold emails you did today? Everyone would say zero. How many cold DMs you did today? Zero. Then why are you crying about leads? Send दैट्स ट्रू 200 एक्चुअली. cold email every day, send 30 outreach every day, do 100 cold calls a day. In 3 months, you would be at a place where you can't even imagine. But 99.9999% people will never do that. I did that for 9 months straight. And I have so much money in my bank account that I was able to run ads and then get to this level where I am. Simple. तो सिंपल लाइक आपने एकदम क्लियर शब्दों में बता दिया है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि excuses is another thing. लेकिन आप थोड़ा सा हम अगर साइंस के साथ सोचेंगे तो फोन इज इनफ टू रीच आउट टू पीपल, रीच आउट टू योर क्लाइंट. एंड अनदर थिंग इज कि हमें लीड जनरेशन करने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं. एज यू टोल्ड कि हमने कितना रीच आउट किया है, क्या हमने कितनी कॉल्स करी, कितने ईमेल्स भेजे, या फिर कितना लाइक और भी लाइक डीएम्स करें उन लोगों को. Simple. इट डिपेंड्स. तो इफ वी विल डू दैट डेफिनेटली लाइक कुछ ना कुछ तो हमारे पास लीड्स आएंगे, कैसे कुछ तो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे, रिजल्ट आएगा. तो दैट्स ग्रेट वे एक्चुअली. आपने जो चीजें बताई है ना एक्सप्लोर करके मतलब एकदम क्लियरली बता दिया. फुल टू हैविंग यू ऑन द शो अगेन. आई एम वेरी थैंकफुल. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन बस ये है कि जाते जाते ऐसे 5 चीजें कौन सी हैं जो एक इंसान एक मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर लाइफ हमें बनानी है तो स्टार्टिंग से हमें ऐसे 5 चीजें किस पे फोकस करना चाहिए जिसकी वजह से हम एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं. तो प्लीज शेयर सम 5 थिंग्स इफ यू लाइक इफ यू वांट टू शेयर विद ऑडियंस. जी प्लीज. Self-esteem, courage, ego check, hard work, and I think the last one would be discipline. If you get those 5 things correct, मतलब, you are dangerous. Okay, so guys, these are the these are the 5 steps to come on like suppose whatever we want to achieve in life. So I think we have to apply all these 5 keys, right? So exactly, thank you so much again on this show, Thank you so much. and I will wait for the next episode. And I'm very thankful to having you. And मैं आपसे भी थोड़ा सा ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज थोड़ा सा समय और निकालेगा
ताकि बाय हमारा बाय। एक एडवांस पॉडकास्ट हो सके, अच्छे से हम उसमें क्वेश्चंस हम अच्छे से प्रिपेयर करके आपके साथ आ सकें, ताकि वो वैलिड क्वेश्चन आपसे पूछ सकें जो वाकई में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो उनके हम आंसर बन सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंकफुल बाय बाय। अलॉट। सी यू। या, बाय। थैंक यू सो थैंक्स मच। सो मच।